बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ेंगे मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 5+ ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है काउंटिंग। हम काउंटिंग को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटिंग में अगर हम अच्छे होंगे तो हम लेटर कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने अभी आगे पढ़ना है मैथ्स में, उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग खड़ी कर सकेंगे उन कॉन्सेप्ट्स की। तो आज का जो हमारा पूरा लेसन है वो हम काउंटिंग को डेडिकेट करेंगे और हम काउंटिंग लिखेंगे 50 से 59, फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को उसके साथ रिलेट करेंगे, फिर हम काउंटिंग लिखेंगे 60 to 69, फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को उस काउंटिंग के साथ रिलेट करेंगे, फिर 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99 पे हम स्टॉप करेंगे और इस यहाँ तक के काउंटिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे। एंड इसके बाद आपने इस काउंटिंग को लाजमी घर पे भी प्रैक्टिस करना है। हम जल्दी से चलते हैं अपने बुक के पेजेस की तरफ। तो ये है हमारे बुक का पहला पेज, नंबर्स फ्रॉम 50 to 59, और ये हैं 2 डिजिट नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम काउंटिंग को स्टडी करेंगे टेंस एंड यूनिट्स के हवाले से। तो लेट अस काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 50 to 59, 10, 20, 30, 40 and 50. Here you are going to write 50, 10, 20, 30, 40, 50 and 51. 10, 20, 30, 40, 50 and 52. 10, 20, 30, 40, 50 and 53. Same goes up till 59. There is a teacher's note. Ask the students to count, read and write the numbers 50 to 59 in numerals. Then explain that the numbers given above are 2-digit numbers, each consisting of 5 tens and a unit from 0 to 9. Complete this exercise in activity book for more practice. There is an engineering activity. Bundle 5 groups of 10 from recycled paper strips or twigs to physically construct the number 50. आपने नंबर 50 को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग पेपर और ट्विग्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा काउंट, कलर एंड राइट द नंबर। हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं। हेयर वी हैव 10, 10 मोर, 10, 20, 30, 40 एंड 50 पेंसिल्स। तो यहाँ पे आप 50 को कलर करेंगे और यहाँ पे 50 को राइट करेंगे। देन 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब है हमारे पास कुछ यूनिट्स 51, 52, 53, 54 एंड 55। कलर 55 एंड राइट हेयर एज वेल। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट द नेक्स्ट नंबर्स। हमारे पास एक नंबर है 52। आपने नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं 53, 54 एंड 55। और अगले क्वेश्चन में आपने प्रीवियस 3 नंबर्स लिखने हैं। 54 से पहले 53, 52 and 51 and same goes with the 2 questions. अब हमने लिखने हैं write the missing numbers। 58 से पहले क्या आता है 57, 52 से पहले before 52 is 51. Now we have to write the in between 51, 52 and 53, 55, 56 and 57. And what comes after 54, 55 and after 50, 51. Then numbers from 60 to 69, ये भी हमारे पास 2 digit numbers हैं। Let us count and write the numbers from 60 to 69. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 61. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 2. 62. 10, 20, 30, 40, 50 and 60 and 3, 63. Same goes up till 69. Teacher's note. Ask the students to count, read and write the numbers from 60 to 69 in numerals. Then explain that the numbers given above are 2-digit numbers, each consisting of 6 tens and a unit from 0 to 9. Complete this exercise in activity book for more practice. यहाँ पे है हमारे पास एक आर्ट एक्टिविटी। Use 6 different colors of chalk and crayon to draw a circle for each group of 10 and then add the units.
अब है हमारे पास कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस. काउंट, कलर एंड राइट द नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64 and 65. Color 65 and write 65 over here. Then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 and 62, 62 over here and write 62 as well. The next question is write the next three numbers. After 61, 62, 63 and 64, and before 63, the previous three numbers 62, 61 and 60. Same goes with the other two questions. In the last question, my dear kids, we have some balloons in pairs. आपने उस balloon को color करना है red, जिसमें greater number है, और the balloon which have smaller number, you are going to color it in blue. So in 24 and 42, 42 is greater number, so color it in red and color 24 in blue. 17 and 14, 17 in red and 14 in blue. 55 and 65, 65 in red and 55 in blue. The next page says the numbers from 70 to 79, again they are two-digit numbers. Let us count and write the numbers from 70 to 79. We have bundles of tens, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 1. 71, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 2. 72, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 3. 73 and same goes up till 79. There is a teacher's note. Ask the students to count, read and write the numbers 70 to 79 in numerals. Then explain that the numbers given above are two-digit numbers, each consisting of 7 tens and a unit from 0 to 9. Complete this exercise in activity book for more practice. There is a technology activity. Use a stick to draw 7 columns of 10 dots in the sand to represent the quantity of 70. Again some questions. Color, count and write the number. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76. Color 76 and write over here as well. And same goes with the next two questions. Just count, color the number and write over here. यहाँ पे आप लिखेंगे write the next three numbers after 72, 73, 74 and 75. Write the previous three numbers. From 74, write 73, 72 and 71. Write the missing numbers. Before 73 will come 72. In between 73 and 75 will come 74. And after 71, 72 will come. The next page says 80 to 89. Again, there are two-digit numbers. Let us count and write the numbers from 80 to 89. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 1. 81, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 2. 82, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 3. 83 and same goes up till 89. There is a teacher's note. Ask the students to count, read and write the numbers 80 to 89 in numerals. Then explain that the numbers given above are two-digit numbers, each consisting of 8 tens and a unit from 0 to 9. Complete this exercise in activity book for more practice. There is a mathematics activity. Mark a number line 80 to 89 on the floor using chalk and jump to the number that is called out. The next page says two-digit numbers from 90 to 99. So let us count and write the numbers from 90 to 99. 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80 and 90. So 9 tens will make 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 1. 91, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 2. 92, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, 93 and same goes up till the number 99. There is a teacher's note. Ask the students to count, read and write the numbers from 90 to 99 in numerals. Then explain that the numbers given above are 2-digit numbers, each consisting of 9 tens and a unit from 0 to 9. Complete this exercise in activity book for more practice. There is a science activity. Collect 9 handfuls of leaves and try to place 10 leaves in each handful to represent 9 tens in 90. There are some questions. Count, color and write the number. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 81, 82, 83 and 84. Color 84 and write over here as well. The next is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Color 97 and write over here as well. Write the next numbers. 92. After 92 will come 93, 94 and 95. After 85 will come 86, 87 and 88 and same goes with 96 and 81. And the last question says write the previous 3 numbers. Just before 94 is 93, 92 and 91 and before 84, 83, 82 and 81 and same goes with 98 and 89. तो मेरे प्यारे बच्चों हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।